मुकाबला फ्रॉम द बॉटम निकला टॉप डाला पैसा तो मुनाफा माँ पे गाली सीधा लाफा रैप द नाका सुनते बांग्ला मुझे धाका मैं 5 स्टार के कपड़े पहन के खाता मैं हूँ धाबे पे स्ट्रीम्स हो या ड्रीम्स अब पूरा कामयाब मैं कोहली वाला माइंडसेट और धोनी जैसा शाप मैं हर पब में जी और गेम है मेरे हाथ में हंसता सीधा बैंक तक 50 वाले लाफ में हा भाई तू है वीक और मैं लेता हफ्ता खुद के तेरे हाथ नहीं तूने रखा चमचा पूरा गैंग ग्राइमी हा टॉप सीधा शॉट्स तेरे ब्रेन में तैयार हो दुनिया के सबसे बड़े ई क्रिकेट गेम रियल क्रिकेट 24 के लिए JetSynthesys presents Global E-Cricket Premier League. Excellent piece of fielding. Oh, he's launched this superbly. देखो 8 जाबाज टीम्स को fighting for glory and 2.51 crores. जब रगों में दौड़े क्रिकेट का जोश और दिल में हो love of esports. With real cricket, India gives e-cricket to the world. बुला रहा है जीत का डिजिटल मैदान. Let's go! Catch the action on Jio Cinema. Pacer has been brought into the attack. Looked impossible. That's his 100 on a top-class inning. Excellent fielding. Huge appeal. And he's given it. Gigantic six. Whoa! Undid the batter with a beauty. Direct hit. He's a gun fielder. He's launched this superbly. Well. 2 more days of action, and we are all here at JetSynthesys presents the Global E-Cricket Premier League. This is going to be Captain Price, your host for the day. Alongside me will be Sam, and it's a very important day again. I think every day is equally important, but 2 more days, 10 matches. उसके बाद top 4 teams, they're going to be happy. और जो qualify नहीं हो पाएंगे, मातम छाया रहेगा वहाँ. देखिए एक चीज जरूर बोलेंगे कैप्टन about the 10 days that has happened. हमने कल बोला था it is time to get serious. So we'll walk over what happened in the 10 days. जब शुरू किया था हमने हर एक टीम को जानते हुए देख रहे थे. They were kind of getting to know each other rather than the other teams. उसके बाद जब उनको मौका मिला पता चला कि हमारे प्लेयर्स ऐसे खेलते हैं एंड ओपोनेंट्स ऐसे खेल रही है, we started seeing a lot of tumbles in the overall standings. हमने इनिशियली भी देखा था कि वाइपर्स ऊपर जा चुके थे, हॉक्स भी ऊपर जा चुके थे, एंड देन वी डिड इवन सी वाइपर्स गोइंग डाउन. उसके बाद उनका वापसी होता हुआ नजर आया. कल भी ऐसे ऊपर नीचे हुआ है. शार्क्स स्पेशली आई थिंक उनका जो परफॉर्मेंस है बहुत डगमगाया है, बट नाउ दे आर एट द टॉप 3 एंड लग रहा है कोई उनको बीट ही नहीं कर पा रहा है. आई थिंक शार्क्स को वो एंकर मिल चुका है. साथ ही साथ आपने वाइपर्स का अगर जिक्र किया है तो यस 4 दिन वो सबसे ऊपर थे. कल सिडनी ने जो बाकी सारे टीम्स के लिए टेंशन का माहौल पैदा किया. आई थिंक दैट्स गोना बी द स्टोरी फॉर द डे कि सिडनी और क्या कर पाएगी. बट इसी के साथ साथ हम जरूर मेंशन करना चाहेंगे कि दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट biggest e-cricket and entertainment league based on real cricket 24. This is the JetSynthesys presents Global E-Cricket Premier League. एक चीज है कैप्टन, हमने हर वक्त देखा है हमारे एनालिस्ट्स कास्टर्स हम भी बात कर चुके हैं कि यार ब्रूट है इनके पास, इनको खेलना चाहिए, रेडिकल है यहाँ पे मारना मौका मिलना चाहिए, बैलेंस टिके रहेंगे. इतना सारा हम डिस्कशन करते हैं बॉलर्स के बारे में. ये स्पिनर आ चुके हैं, ये फास्ट बॉलर है, बट जितना भी हम बात करें, अरे ब्रूट क्या करता है आप बताओ? शॉट्स मारता है, यही बोलेंगे हम.
कि बहुत सारा मुझे नहीं अपॉर्चुनिटी पता। रहता है। तो देखो, इसी मुझे कंफ्यूजन इतना को समझ में आता है, मैं जब कोई भी प्लेयर को देखता हूँ ना, ठीक है, तो मुझे देख के बस ये आइडिया था, हाँ ये बंदा तो बहुत मारता है, ठीक है। जब भी मैं नेताजी को देखता हूँ मुझे लगता है ये तो बॉलिंग भी अच्छी कर रहा है, Yes. फिर बैटिंग भी अच्छी कर रहा है, एंड आई थिंक ही इज द ओनली बैलेंस प्लेयर जो कि ओपनिंग कर रहे हैं Yep. ऑन द आइदर साइड ऑफ द पिच। बट इसी के साथ देखिए, हम तो इतने डिस्कशंस कर रहे हैं, बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम दर्शकों को भी बताएं कि क्या है यार ये रेडिकल बैट्समैन क्या है, व्हाट इज ब्रूट, व्हाट इज अगेन द बैलेंस बैट्समैन। बट आई थिंक ये हमसे ना समझ के अगर प्लेयर्स खुद समझाए तो ज्यादा Yes. बढ़िया रहेगा। तो उसके लिए किसको बुलाए हम स्टेज पे? आई थिंक टेबल टॉपर्स को बुलाना पड़ेगा यहाँ पे। yeah, द I think टेबल so. टॉपर्स at the end of day 9, none other than Kolkata Hawks. Kolkata Hawks, please come on stage. जल्दी, इनसे जल्दी। हम बात करेंगे ब्रूट का मतलब क्या होता है, क्यों आप ब्रूट इस प्लेयर को खिलाते हो, कितना इंपॉर्टेंट है वो प्लेयर, एंड उसके बाद आते हैं रेडिकल, बैलेंस, देन वी टॉक अबाउट द बॉलर्स। आप यहाँ पे आ जाइए हमारे दोनों के हमारे बीच बीच में। में आ जाओ यार। पहले किससे शुरू करें लेकिन? ब्रूट एज यूजुअल, हम हर वक्त ब्रूट को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं। कृणाल आ चुके हैं, एंड आ कृणाल जाओ कृणाल, मेरे पास आ जाओ, आप मेरे पास आ जाओ। मुझे बताओ आगे आ ये जाइए, आगे आ ब्रूट जाइए। क्या है? आगे आ मान लो जाइए कोई सर। रियल क्रिकेट पहली बार खेल रहा है, ठीक है, तो ब्रूट को हम कैसे समझाएंगे दर्शकों को? 1 सेकंड, चेक, यस, अभी चेक कर लो एक बार। हाँ, आगे आ यस। तो ब्रूट क्या है बेसिकली? ब्रूट, हम इतना बातचीत करते हैं कि हाँ ब्रूट है, ब्रूट से डर के रहना पड़ेगा, तो ये ब्रूट है क्या जो पहली बार खेल रहे रियल क्रिकेट उनके लिए? Brute is basically a player who plays with an aggressive mindset. He has a lot of timing, other than balanced player and radical player. In real life, you can see how McCollum plays. He is a brute player. So basically, brute plays in a very aggressive manner. तो आपने हम दोनों को खेलते हुए देखा है ना, ब्रूट कौन है बताओ जरा? आप दोनों तो बैलेंस प्लेयर हो। ऐसे नहीं करवानी मतलब थी मुझे कैप्टन- बेइज्जती, बट कोई बात नहीं। हम दोनों को जलाना था क्या बीच में? हाँ, वो तो- इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे, करने दो ना। बट सी इट्स ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द शो। चलिए, ब्रूट के बारे में, अगर किसी को वो ब्रूट प्लेयर बनना है तो कितना ज्यादा उनको मेहनत करना पड़ेगा, कितना ग्राइंड करने की जरूरत है? इन गेम उसको मिडल बहुत कम लगता है बैट में, क्योंकि उसकी टेक्निक बहुत कम होती है, लेकिन जी। उसका टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो इन नेट्स यू कैन प्रैक्टिस टाइमिंग का। राइट, तो टाइमिंग बहुत सही होना चाहिए ब्रूट उसका प्लेयर बनने के लिए। टाइमिंग उसका ज़्यादा है, मीन्स जिसका टाइमिंग अगर कम भी होता है कोई प्लेयर का, तो उससे प्रैक्टिस करके वो शायद परफेक्ट खेल सकता है। ठीक है, तो आपने बैलेंस का जिक्र कर लिया, तो नेक्स्ट बैलेंस से बात कर ले कि बैलेंस ओवरऑल है क्या? तो बैलेंस के लिए कौन सत्येंद्र। सही रहेगा सबसे? सचिन, आई थिंक, हाँ सचिन will सत्येंद्र। be- हाँ सत्येंद्र, हाँ। ठीक है, चलो सत्येंद्र से बात करते हैं। सत्येंद्र, आप बताएं कि ये बैलेंस प्लेयर क्या है? इन्होंने तो देखिए हमें बोल दिया कि हम ब्रूट नहीं बन सकते, तो बैलेंस हम किस बेसिस पे, आप थोड़ा समझाएं हमारे दर्शकों को। बैलेंस प्लेयर एक ऐसा प्लेयर है जिसके पास ब्रूट और रेडिकल प्लेयर से थोड़ा कम टाइमिंग होता है जी। और उसके पास ज़्यादा शॉट्स रहते हैं, लाइक ब्रूट से भी ज़्यादा और रेडिकल से ज़्यादा शॉट रहते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ शॉट्स। तो बहुत ही उसको बढ़िया। वो सिचुएशन के हिसाब से खेल सकता है अपने हिसाब से, और शॉट लास्ट में गेम निकाल सकता है। तो आपके हिसाब से बैलेंस प्लेयर को कब खेलना ज्यादा जरूरी है, मैच के स्टार्टिंग में या फिर जब कम गेंदों में ज्यादा दौड़ बनानी है? नहीं, सिचुएशन के हिसाब से खेलना चाहिए। अगर Situation के ज़्यादा हिसाब रन चाहिए तो Right. ब्रूट को ही पहले खिलाना चाहिए, लास्ट में जैसे रन बॉल चाहिए तो बैलेंस को उतार सकते हैं। राइट, हम किसको पकड़े नेक्स्ट? मैं वही सोच रहा हूँ। देखिए, आपने ब्रूट को बात कर लिया, बैलेंस से बात कर लिया, तो Radical रेडिकल ही को बचता कैसे है। भूल सकते हैं? जी हमने हाँ। रेडिकल का कल कमाल देखा था। सुजित, आप बताइए हमें। वहाँ पे कृणाल ने बताया कि टाइमिंग बहुत सही रहता है हमारे पास, तो हम खेल सकते हैं। यहाँ पे बोलते हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा शॉट्स रह सकता है बैलेंस के पास, तो रेडिकल को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इन दोनों के बीच में? बेसिकली रेडिकल जो है उसके पास ब्रूट से कम टाइमिंग होती है, लेकिन बैलेंस और डिफेंस के तुलना में उसके पास ज़्यादा टाइमिंग होती है, जिससे वो बैलेंस और डिफेंस के तुलना में वो ज़्यादा सिक्सेस एनी टाइम मार सकते हैं। प्लस उसके पास टेक्निक ब्रूट की तुलना में ज़्यादा होती है, जिससे वो डिफेंसिव भी बीच बीच में खेल सकते हैं। देख लो, ध्यान से नोट कर लो, जो भी घर बैठे देख रहे हो, जो भी ऑडियंस में है जिन्होंने रियल क्रिकेट गाइड नहीं किया है, ये जो आपको नॉलेज मिल रहा है खुद प्लेयर्स से, टेबल टॉपर्स, ये कहीं और नहीं मिलेगा। दिस इज व्हाई दिस इज द बिगेस्ट टूर्नामेंट ऑफ मे बी दिस सेंचुरी इवन। देखिए, रोल्स बहुत क्रूशियल है, तो मैं सुजीत आपसे पूछना चाहूंगा। उन्होंने ब्रूट के बारे में बता दिया, इन्होंने बैलेंस के बारे। आपके हिसाब से कौन सा खेलना बेस्ट है? बेस्ट तो अगर वो तो सिचुएशन के हिसाब से ही हम लोग खेलेंगे, तो बेस्ट है अगर हमको रन बॉल ज़्यादा चाहिए, कम बॉल में ज़्यादा रन चाहिए, अगर ब्रूट जल्दी आउट हो जाए तो रेडिकल वो काम कर सकता है, ब्रूट का काम। राइट।
देखिए ये तो हो गई बैट्समैन की बात, यस लेकिन दूसरा किस्सा भी तो है। सिर्फ बैटिंग से अगर क्रिकेट हो जाता तो क्या ही हो जाता। वेल, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है साहब, हमने बात की है स्पिनर्स की, बात की है हमने फास्ट बॉलर्स की, बात की है। आजकल स्पिनर्स पावर प्ले में ज्यादा हमें दिख रहे हैं, राइट? Yep. तो सबसे पहले स्पिनर से बात कर लेते हैं, फिर हम फास्ट बॉलर पे आएंगे। यहाँ पे पेसेस से बात करते हैं क्योंकि पेसेस चलिए, को ठीक लेट एंट्री मिलता है पिच के अंदर, तो पेसेस से बात करते हैं। सौरभ यहाँ पे कोलकाता हॉक्स के पेसर जी, आप बताइए कि जब बॉलिंग करने का मौका मिलता है, उन्होंने बैटिंग की तरफ से बोल दिया कि रन्स कैसे स्कोर कर सकते हैं, टाइमिंग कैसे होना चाहिए, बट उस रन्स को रोकने के लिए कितना क्रूशियल रहता है पेसर? फास्ट बॉलर की एक अलग ही कहानी होती है। अपनी टीम में एक जो फास्ट बॉलर जो पेसर रहता है, उसके पास सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा पेस होता है, यस, और उसके पास स्लो स्टेट जो बॉल होता है वो सबसे मेन बॉल होता है उसका। तो किसी भी बड़े बड़े बैट्समैन, भले ब्रूट, रेडिकल, बैलेंस, कौन सा भी बैट्समैन हुआ तो उसको हम इजी फंसा सकते हैं। खतरनाक है ये फास्ट बॉलर। हम सोचे थे स्पिनर्स बहुत खतरनाक होने वाले हैं, ये ट्रैप्स के बारे में थोड़ा जिक्र कर रहे हैं, हाँ। बट इनके साथ उनके मीडियम फास्ट भी है। लेकिन एक चीज आपने नोटिस की है, कोई भी पूरा एकदम पाई टू पाई डिटेल्स नहीं बता रहे, क्योंकि खुद का गेम आप भी है। बोल रहे हो इनको स्ट्रैटेजी रिवील करने हैं? इनका मैचेस है आज। हाँ, आज मैच भी है, कोलकाता के बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस रहेंगे आज। तो अभी सिर्फ सौरभ से बात कर लिया, सौरभ से बात अभी कर लिया। चलेंगे सचिन के तरफ जो इनके मीडियम फास्ट है। देखिए ये डिफरेंस बताइए, इन्होंने फास्ट के बारे में बता दिया, ये मीडियम फास्ट के मतलब क्या है? फास्ट इसमें नाम में भी है, बट मीडियम क्यों कहाँ से आ गया? जैसे सौरभ भाई ने बताया फास्ट के बारे में, मीडियम फास्ट के पास सब वेरिएशन सेम रहते हैं, बस बट सिर्फ इनका पेसर है थोड़ा फास्ट आता है और मीडियम फास्ट का थोड़ा स्लो आता है, और स्लोअर और फास्ट में बहुत सारा डिफरेंस रहता है, तो बैट्समैन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकता है। अच्छा, उनको टाइमिंग करने में बहुत दिक्कत आती है मीडियम फास्ट पे, बट मीडियम फास्ट कभी कभी पीट भी जाता है, कभी कभी मैच भी निकाल सकता है। इतना डिफरेंस है मीडियम फास्ट एंड फास्टर में, बस इतना ही डिफरेंस है, वेरिएशन सेम ही है। वेरिएशंस टेक्निक में। यहाँ पे yeah. देखिए हमने सौरभ से बात कर लिया, सचिन से बात कर लिया, अभी सहवाग कौन है इस टीम में? सहवाग चाहिए या अनिल कुंबले चाहिए या फिर राहुल द्रविड़ चाहिए? अभी ऐसे ढूंढते रहेंगे ना, कॉम्बिनेशन बना देंगे हम पूरा 90s का इंडियन क्रिकेट टीम बना देंगे, लाइक हमारे जमाने का। कुंबले बोल दिया इन्होंने, तो इनके कुंबले जो अभी के लिए आ रहे हैं, द हाईएस्ट विकेट टेकर इज मिर्दा जी, तो इनसे बात करेंगे। आप स्पिनर है, ओपनिंग करते हैं, हाईएस्ट विकेट्स है आपके पास, तो आपको कितना मुश्किल होता है जनरली आप फर्स्ट ओवर्स डालने के लिए जब भी आते हो, क्योंकि इट्स वेरी क्रूशियल कि ओपोनेंट टीम को मोमेंटम ना दे? हाँ, एक्चुअल में प्रेशर तो रहता है, क्योंकि बेसिकली स्पिनर के सामने ब्रूट जैसे बैट्समैन आते हैं कि वो मिस टाइम भी करेंगे तो वो बाउंड्री चला जाएगा। बट जैसे मेरा इस टीम में रोल है कि ब्रूट को पावर प्ले के अंदर ही उसको आउट कर दिया जाए, ताकि बाकी बॉलर को बाद में इशू ना हो बॉलिंग करने में। बैलेंस और आएंगे तो वो इतना शॉट नहीं खेल पाएंगे, तो हम वही करते हैं। हल्का सा एक स्ट्रेटेजिक आइडिया भी दे दिया है कि कैसे गेम के पावर प्ले ओवर्स खेलने चाहिए। बट थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने बताया। आई एम श्योर कि जो भी रियल क्रिकेट के दूसरे खिलाड़ी है वो भी इससे काफी स्टडी करेंगे। अगले साल शायद हमें और नए खिलाड़ी देखने का मौका मिले। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोग एंजॉय कीजिए, आपका इंपॉर्टेंट है। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर कोलकाता हॉक्स लेडीज एंड जेंटलमैन। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। देखिए इनके वजह से हमें इतने चीजों के बारे में पता चला, लाइक व्हाट कैन बी प्लेड, व्हेन, क्यों खेलना चाहिए, व्हिच इज गोइंग टू बी क्रूशियल, ये सब इन्होंने हमें बताया है। ये सब नॉलेज गेम में लगाना ना बहुत मुश्किल रहेगा, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल रहेगा। बट उसी के साथ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आज के दिन पे जो भी टीम्स के 3 मैचेस बाकी है, मोस्ट ऑफ देम विल हैव ओनली वन लेफ्ट। कल सिर्फ 2 टीम्स रहेंगी, कल सिर्फ 4 टीम्स रहेंगे जिनके 2 मैचेस बाकी रहेंगे। आई रिमेंबर जेडी की टीम न्यूयॉर्क एप्स, उनके लास्ट दिन पे 2 मैचेस, सो प्रेशर, आई मीन इट्स गोना बी ट्रेमेंडस। बट आज आप अपना वो ग्राउंड सेट कर सकते हैं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत शायद उतनी ना हो। बट इन सारी चीजों से पहले, बिफोर वी थ्रो इट ओवर टू द एनालिस्ट, इट्स टाइम दैट वी थैंक आवर स्पॉन्सर्स। Starting off with our title sponsors, JetSynthesys, official partner हमारे none other than Finolex Pipes, Pulsar NS 125, Lenskart, Groove Global School, फ्लीटकार्ट फिल्टर। उसी के साथ साथ ऑफिशियल पार्टनर्स में जरूर रहने वाले हैं फ्लिपकार्ट, AMD, गीगाबाइट, LG अल्ट्रा गियर एंड ज़ेब्रॉनिक्स। हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स स्काई esports, रियल क्रिकेट 24, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन, हमारे ब्रॉडकास्ट पार्टनर स्पोर्ट्स 18 एंड हमारे स्ट्रीमिंग पार्टनर जियो सिनेमा, जहां पर हर शाम के 5 बजे न्यू एपिसोड्स आते रहते हैं। जो भी एक्शन हुआ है सब कुछ आप एंजॉय कर सकते हैं, बस जाके आप जियो सिनेमा पे सर्च कीजिए GEPL, आपको सारे एपिसोड्स मिल जाएंगे। वेल सैम, विद दैट बीइंग सेड, आज है डे नंबर 10। Yes. One more day to go after today. आज के मैचेस का इंपॉर्टेंस शायद हम शब्दों में बयां ना कर पाए, बट
कितना इंपॉर्टेंट है ये, स्पेशली पहला मुकाबला किस प्रकार का जाएगा, उसके भी प्री मैच सेगमेंट के बारे में जरूर बातचीत करेंगे हम। एंड आज का ओवरऑल दिन का क्या सेगमेंट रहेगा, ये सारे डिटेल्स में बात करने वाले हमारे एनालिस्ट रोशन एंड चेतन। सो एक चीज है जो हमारे जो प्लेयर्स है ना जिसके लिए लड़ रहे हैं, इज गोइंग टू बी द GEPL फाइनल्स। कहाँ पे होने वाला है? छत्रपति शिवाजी क्रीडा स्टेडियम जो है बालेवाड़ी पुणे में। मेक श्योर यू आर रेडी टू ज्वाइन। हमारे दर्शक भी आ सकते हैं एंड यही फाइनल्स में जिस टॉप 4 टीम्स क्वालिफाई होती हुई नजर आएगी एंड लड़ रही है ना सिर्फ स्टेडियम में खेलने के लिए कैप्टन, बट दे आर आल्सो प्लेइंग फॉर द 2.51 करोड़ प्लस उसके साथ इट इज गोइंग टू बी द पल्सर NS 125। हर एक खिलाड़ी को मिलने वाला है। देखिए पल्सर 125 है, राइट। तो जो भी आएंगे खेलने के लिए, जो भी 4 टीम्स क्वालिफाई हो पाएंगी, मैं दोबारा से बताना चाहूंगा हमारे सारे दर्शकों के लिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीडा में खेला जाएगा, क्रीडा स्टेडियम में खेला जाएगा ये GEPL फाइनल्स। 4 टीम्स आगे बढ़ने वाली है। वो 4 टीम्स कौन होंगी कल दिन के अंत तक हमें जरूर पता लग जाएगा, लेकिन आप अगर आना चाहते हैं जरूर आ सकते हैं। सोशल्स को फॉलो करते रहिए, आपको डिटेल्स सारे के सारे रिवील कर दिए जाएंगे धीरे धीरे करके। बट उसी के साथ मुझे लगता है पल्सर NS 125 मिल रहा है, लेंस कार्ड के ग्लासेस मिल रहे हैं, बट वी कैन नॉट फॉरगेट द ह्यूज प्राइज पूल जो हम देख रहे हैं। 2.51 crores. That is the prize pool of this season for GEPL. इसके साथ हमने अभी बात किया था फॉर द डे एज ऑफ नाउ व्हेन वी स्टार्ट डे 10, हमारे पास जो हाईएस्ट विकेट टेकर्स मिर्जा जी के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं, बट वी नीड टू give justice. This man has done so much. The highest run scorer of GPL so far has been there from 2 days. Biswas, none other than from Delhi Sharks. क्या आज के दिन में कोई इनको हटा पाएगा, इनके हाथ से बैंड छीन पाएगा? नहीं, we will see it आज के दिन जो मैचेस है। एंड कैन देयर बी एनी चेंजेस बिकॉज ओवरऑल स्टैंडिंग्स आपने बताया था देयर आर सम टीम्स हु हैव 2 गेम्स व्हिच विल बी कंप्लीटिंग 13 गेम्स ऑफ देयर डे। इसका मतलब उनके पास बचेगा सिर्फ एक गेम डे नंबर 11 पे। एंड आई डोंट नो इफ टुडेस गेम इज गोइंग टू वर्क आउट फॉर देम, क्योंकि हमने टेबल टॉपर्स को कल के दिन में क्रम्बल होते हुए देखा है। Well, we'll see what happens, but for now it's time the analyst takeover. So Roshan and Chetan, please take it away. Hello, welcome, namaste to JetSynthesys presents the Global E-Cricket Premier League. Remember, we are in the very first season. Day 9 gave us some cracking contests and some nail-biting finishes. Of course, we did see the biggest opening partnership and also 250s, one by Biswas and the other one by Azan. We are on day 10, remember, and this is a very crucial day. Of course, the next 2 days, in fact, are very crucial for the teams to decide the top 4 who will eventually be going for that qualifier. Joining me along is my expert Chetan Narula. Chetan, 2 important days. We already know for a fact that Chennai is now almost out of the competition. Hello, Roshan, and hello to our viewers as well. And you're absolutely right. Just the thing, let's take almost out. Chennai are eliminated from the competition. But after 46 matches, there are 10 matches remaining in the round robin league stage. And there are still 7 teams in contention. और उससे भी बड़ी बात है कि आज 3 टीमें क्वालिफाई कर सकती हैं नॉकआउट के लिए, but we will get to that. First, let's take a look at the team's journey. Then, of course, we did see right in that month of June, eventually towards the month of July, where we did see lakhs of participants registering themselves into the first ever GEPL tournament. And then eventually we did go to that challenger mode where we got the top 100 talent in the country to come down for the first ever official draft. And then it brings us to this closed league where we are now building up to the top 4. We've had 9 days of non-stop action, 10 day it is and this one, of course, no surprises, is going to be another big surprise-filled day. Absolutely. Game day 10 and game day 11 आपको देंगी वो top 4 teams जो कि खेलेंगी हमारे LAN event पे, which is on December 8th, and that will be the grand finale, the GEPL finale. And these 8 teams, इसमें से जैसा हमने आपको बताया कि Chennai Wolves, unfortunately, they are out of contention, but the remaining 7 sides are in contention. Dubai and Kolkata, one of them will qualify today. Delhi, London, New York, Mumbai, Sydney, they are also all in contention. ये जो 10 मुकाबले बचे हैं ना, ये बहुत घमासान होने वाला है. And the fact that, you know, it has actually come down to the last 2 days for us to decide, and still 7 teams in contention makes the league so interesting, and that curiosity is being built. Of course,
5 games of the day, but this is how that points table look like. Kolkata Hawks and Dubai Vipers both have lost the encounters yesterday, but they still maintain that top of the table. Rather, Kolkata maintaining the top of the table, followed by Dubai Vipers. Yeah, I mean, day 9 was not a good day for both Kolkata and Dubai. They lost their 2 games. You know, they had double headers and they lost both games. So, अब थोड़ा सा विस्तार में समझाते हैं. First of all, 14 points are not a guarantee of qualification, and this goes for all 7 teams. If you get to 14 points, net run rate will come into play. Then 16 points gets you to top 4. अगर आज कोई भी टीम 16 पॉइंट पहुंचेगी, वो अपनी टॉप 4 में जगह कंफर्म कर लेगी. If you get to 18 points and 2 teams can get to 18 points, then you will finish in the top 2 sides. वो आज नहीं होगा, वो कल ही होगा. So these are the different classifications. Now let's talk about Kolkata and Dubai. They are playing each other, so the winner will qualify. Mumbai is playing 2 matches today. London is playing 2 matches today, but they are not playing each other today. जिसका मतलब है कि Mumbai and London both have the opportunity to reach to 16 points, and we could have 3 teams qualifying. The winner of Kolkata versus Dubai, Mumbai and London, बशर्ते कि मुंबई और लंदन अपने दोनों मुकाबले जीत जाएं. And then the remainder will be between Delhi, New York and Sydney, and the loser between Kolkata and Dubai. So it's going to be a very, very intense day. Thanks, Chetan, for that detailed explanation, because now the teams are going to be very careful about how they're going to play and eventually get down to every contest. And of course, we have that big game coming up. We have the Vipers taking on, of course, well, this is going to be interesting today. Kolkata and Dubai taking on each other's. There is no room for complacency. There is no room for experimentation. There is no room for any type of lightweight mode. अब आपको heavyweight mode जगाना है अपना. आपको intensity दिखानी है अपनी. Mumbai playing New York, both teams in contention. London have a bit of an advantage. Chennai already eliminated, but Chennai will be playing for pride. They want to reach double figures. Kolkata, Dubai, that's the big match today. The winner qualifies. Mumbai, Delhi, again, both teams in contention. And then London and Sydney, again, both teams in contention. Well, the fact that all these teams will still have so much to play for. And there, of course, we have our predictions for today. I think a very diverse one. In fact, we are not going with the same kind of stuff today, which will make things more interesting to look forward to how things will be. Only the second game, Roshan. Only the second game where London is playing Chennai. So let's say, buck up Chennai. You can spring a surprise. You still have a say in this qualification the party process. Of London. Yeah, they can actually spoil they have London's a say. party. They have a say. They're playing 3 teams. और उन तीनों teams को अड़ंगी दे सकते हैं. And that becomes a problem for the teams who are playing the team that has already been eliminated, because you have nothing to lose. Absolutely. And this is the game that we are all looking for. The first one for the day. Day 10, remember, Mumbai Grizzlies taking on New York Apes. The last time these 2 teams met, it was Mumbai who won by 5 wickets. An absolute mayhem out there. And then remember, Mumbai come with 1 victory against Chennai and 1 loss. On the other end, New York with 2 back-to-back victories, which makes it a little interesting. Yeah, I mean, if you look at overall form of these 2 sides, I mean, you have Mumbai, who have only won 2 matches in their last 5 games. New York have won 3 matches in their last 5. And as you said, they are coming with back-to-back wins. Look at the roster of the Mumbai Grizzlies. I mean, it's a star-studded lineup. Davinder back in form with both bat and ball. Sajan, he is always been their batting mainstay. पीके पिछले मैच में कुछ नहीं कर पाए, लेकिन कल के एक मुकाबले में उन्होंने बहुत जबरदस्त खेला था. He is their brute player. आपने आपको आज explanation दी है. His impact will be intense. And Milan, Swapnil and Abhishek, they will have to step up with the ball. Davinder coming back to form in itself is good about for Mumbai Grizzlies. Remember, he got that 44 yesterday eventually against Chennai, which makes things a lot more tighter up there. On the other end, New York Apes, they're having a fine form. Just for the last couple of games, just seeing their big guns fire, Chetan. Yeah, New York Apes के लिए कमल का contribution बहुत vital रहेगा. He has the second highest 6 hitting percentage in the tournament. और हम बता सकते हैं, मतलब I think you can guess who has the highest. That is our double half century maker सौम्यदीप्ता विश्वास. लेकिन कमल का जो contribution है, वो बहुत ज़्यादा vital रहेगा, especially against Mumbai's bowling. Well, the best part is that, you know, irrespective of whether we're predicting or not,
when the players come down, even they themselves know what is going to happen, and that is the best part of the GPL. Well, you cannot predict, and eventually that's how things are turning out to be. Just another more day of action after today's, which will decide the top 4. और हमेशा की तरह हम आपको सुनाएंगे एक कहानी, मिलवाएंगे हम अपने खिलाड़ियों से। और आज जिस खिलाड़ी से हम मिलवाएंगे सबसे पहले, उन्होंने तो हिस्ट्री बुक्स में अपना नाम लिख दिया है। वी आर टॉकिंग अबाउट नेताजी फ्रॉम द न्यूयॉर्क एप्स, द फर्स्ट एवर प्लेयर टू टेक अ हैट्रिक इन द हिस्ट्री ऑफ GEPL। चलिए उनकी कहानी सुन। Hi, I am Netaji. I am coming from Chennai. My father was tailor and my mother was a housewife. I completed BTech Information Technology. I passed out in 2022 only, and I now working in IT field. And I started my RC career in 2019, and it was started in some contest with hosted by Nautilus only. After that, I got motivated and I started playing every tournaments like that only. In my free times, mostly watching movies and listening songs, etc. Something. Mostly, I like that swag, something like dressing and some hairstyles. Maybe it gives more confidence to me. It was a very strongest teams. There was daily changes in points table. There is no fixed positions for every team. Yesterday also the table toppers also lost both their matches, and there was opened for 4 positions also open. So any team can win in upcoming 2 days. In my family, my dad and mom, they are not like other parents. They easily accepting to motivate me for that for this event. In my bowling, I got a hat trick, and well, yesterday Dubai opening match also opener batsman. So I hit 25 plus in 7 balls and got man of the match. And I would like to thanks to the GEPL community, the GEPL management. It was the very big opportunity to all the esports cricket players. So it will be a great one. Geo Cinema, Instagram, எல்லாத்துலேயும் என்னோட பெர்ஃபார்மன்ஸை பார்த்து ரீல்ஸ் சம்திங் போஸ்ட் அதெல்லாம் பார்த்து விஷ் பண்ணியிருந்தீங்க. எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ். அண்டு மேலும் வர மேட்சஸ் எல்லாத்தையும் பாருங்கள். இதுக்கப்புறம் தான் பெரிய மேட்சஸ்லாம் இருக்குது. அண்டு அதே மாதிரி என்னை சப்போர்ட்டும் பண்ணுங்கள். RC தமிழ் பசங்க group members and Immortal group members, thanks for supporting me. The matches are live on Geo Cinemas, and you can watch every matches from the day 1 to day 10. But if you're wondering where does that hat trick come from, certainly there's so much from that family support which really helps you to take your performance a notch higher. Now, of course, getting back to the game, this is a crucial encounter for both these teams. We'll have a look at the players to watch out for, because these are the ones who have that magical stick in their hand and can actually change things for their team out here. Yes, without a doubt, Davinder, exceptional form yesterday. The fact that he's now wanting to come up the order is making things a lot more tough for the other side. Yes, you know what? He opens the innings with PK that allows Chhatrapati to control the game after the power play. It's a good strategy, but it needs to work. Of course, हमने देखा है मुंबई कुछ मुकाबले हारी है, वहाँ पे उनकी बैटिंग वर्क नहीं करी है, खासकर कि अगर वो पहले बैटिंग करते हैं. But to me, the most important thing is he's back taking wickets because he's an all-round player. कमल की हमने पहले भी बात की है. Look at that strike rate, 260. जैसा मैंने कहा, the only second player in the tournament with the highest 6 hitting percentage. You know, Davinder bowling, Kamal batting, that is the contest of this game. But of course, apart from these players to watch out for, it is also important for the others to fire. Remember, it's a team game, just to remind everybody, where these individuals, they started with a 1 versus 1, but now they play together. And that's what will be the things to look out for in the first contest. We are all ready for the toss for the 10th day, the first match. Let's go down to our host, who's there with the captains and the umpire. Thank you so much, Roshan and Chetan, for the lovely insights. But I have some insights of my own. Before revealing it out to all of you guys, I would love to invite both of these teams on the stage. A very crucial game for them. Why is it so crucial? After inviting the teams, I'm going to reveal it to all of you. So let's invite Day 10, match number 1. Both the teams on stage. Guys, I want the loudest round of applause during this part. The teams are NewYork Apes and Mumbai Grizzlies.
Pulsar Mania is here. Maniacs wanted. Piyush, hey, I was just on Lenskart. ये जो price है $999, right? नहीं करण, रुपीज है. I can't be seen wearing glasses under 1 lakh. Price थोड़ा ज्यादा हो सकता है क्या? करण, ये बढ़िया प्राइस है. It's only because we don't have middlemen. 90,000? आप कहीं और से ले लो. 80,000. I'm going. Bye. अमीरों की हाई लगेगी तुझे. फैक्ट्री वाले प्राइसेस, नो मिडलमैन. लेंसकार्ट, डाउनलोड द ऐप. लेकिन ये पाइप चलेगा. फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं. Now, I did mention that it's a very important game. Statistically, according to the overall points table, if New York wins this match, they go to top 3, and Mumbai come down from 4th to 5th. But if Mumbai wins this match, they go to top 3, and New York is in deep trouble. Well, we'll speak to both the captains first, then proceed with the toss, or maybe reverse. Let's see what happens. But for now, JD, आ जाओ. रविंदर पाजी, आप भी आ जाओ. ये मैच का टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें भी पता है, राइट? तो पहले टॉस कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा मजाक करके मूड हल्का कर लेंगे, ठीक है? तो अंपायर जो हमारे कल के थे वो भाग गए हैं. उन्होंने बोला कि उनको बर्थडे पार्टी करने जाना है, वो वेकेशन पे चले गए. सो वी हैव अ न्यू अंपायर, सो प्लीज वेलकम ऑन स्टेज विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज द न्यू अंपायर फ्रॉम टुडे. Okay guys, who's calling? JD is calling. Let's go with the toss. JD is calling. Heads. JD's call is head, and heads it is. JD starting it off with a huge luck bonus. So JD, मुझे पूछना ही नहीं है, पता है कि क्या लोगे, बॉलिंग या बैटिंग. बॉलिंग ही लोगे? बॉलिंग पक्का. एक बार आपने मुझे बोल दो कि बॉलिंग करोगे. बॉल फर्स्ट. बॉल फर्स्ट. अभी आप बताओ, मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर आप जीतते हैं आप टॉप 3 में जाओगे. अगर आप नहीं जीत पाते हो आप एक बहुत गलत जगह पे फंस जाओगे. तो उस सिलसिले में आपका माइंडसेट क्या है? अभी तो गेम प्लान बिल्कुल सिंपल है. इस मैच के बारे में सोचेंगे, अच्छा करने की ट्राई करेंगे, बाकी देखते हैं. सामने वाले भी तो खेलने के लिए आए. एकदम देखो, खुद को भी कॉन्फिडेंस दिला रहे हो, ओपोनेंट को भी बोल रहे हैं कि भाई देखो हमसे बच के भी रहना, बट हम भी तुमसे बच के रहेंगे. सही है, ठीक है. मैं एक बार रविंदर पाजी से बात कर लेता हूँ. तो रविंदर पाजी, आप बताएं, मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है कि हाँ, मुंबई के लिए ये क्यों सबसे इंपॉर्टेंट मैच है. आप लोगों का शुरुआत जो था, उसके बाद हमने डाउनफॉल देखा, फिर धीरे धीरे आप लोगों ने स्टेबिलिटी लाए, बट अभी वही फिर से जेडी भाई की तरह जो पीछे चल रहा था वही है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है. तो इस सिलसिले में आपके दिमाग में टीम का माहौल कैसा है? नहीं, टीम का माहौल बहुत अच्छा है. अभी ये मैच जीत के हम टॉप 4 में अपनी पोजीशन सिक्योर करेंगे. तो सभी प्लेयर अच्छा खेल रहे हैं. तो इनसे हमारा लास्ट मैच हुआ था, तो हमने मतलब इजी विन किया था. अभी ट्राई करेंगे अच्छा खेलने का, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा. तो क्या आपको लगता है ये इजी विन हो सकता है, या फिर ये पूरा एकदम हार्ट एंड सोल देके खेलना पड़ेगा? नहीं, इजी विन नहीं बोल सकते इसको. मुझे भी यही लगता है. वेल जेंटलमैन, प्लीज शेक हैंड्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला है, मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं रोकने वाला हूं. लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज गेम नंबर 1, डे नंबर 10 of JetSynthesys presents the Global E-Cricket Premier League. Put your hands together for both of these teams. This might be the decider for them. And with that being said, the analysts are ready. So Roshan and Chetan, please say. There, of course, New York winning the toss and choosing to bowl. No surprises from that, and knowing the fact that it's such a crucial day for them. Yesterday, in fact, both of these teams won the toss and won the game as well. The question is, can New York really repeat that feat today? You know what, I'm just thinking, 10 मैच बचे हैं, qualification on the line. आपको रिस्क लेना ही नहीं है, आपने पहले बॉलिंग करनी है और टारगेट चेज करने का कोशिश करना है. I'm just waiting to see what happens today. Well, we'll see what happens then. But for now, our casters are ready. Let's go down to Floki and Cripps, who will be calling this game. All new Pulsar Mania is here. Maniacs wanted. अब आगे कुछ भी हो सकता है. निकर और टी-शर्ट पहन के आया साइकिल, लोन लगा के फोन बता दे सबको बच के.
जो खुद की सुनते हैं दुनिया उनकी सुनती है। लेंस का आकड़ है, लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों और सज्जनों और हमारे सारे दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है ग्लोबल ई क्रिकेट प्रीमियर लीग में। मैं हूं फ्लोकी, मेरे साथ है क्रिप्स और हम दिन के पहले मैच पे आ चुके हैं जो खेला जाएगा न्यूयॉर्क एप्स और मुंबई ग्रिजलीज के बीच में। क्रिप्स, both of these teams really need these wins, but I think the New York Apes might just need it a little bit more. Yeah, but it doesn't really matter who needs it a little bit more. Both these teams need to win it with a dominant margin. जीत के आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन सिर्फ पॉइंट्स इकट्ठा करना अभी काफ़ी नहीं रहने वाला है। हम टूर्नामेंट के इस मुकाम पे पहुंच गए हैं जहां पे आपको जीतना है तो डोमिनेंट रन एंड स्कोर लाइन की डिफरेंस से जीतना पड़ेगा, तब जाके आप अपना नेट रन रेट जो है वो इम्प्रूव कर पाओगे। बिकॉज इन दी एंड बहुत सारी टीम्स अगर 14 या 16 पॉइंट्स पे जाके अटक गए और टाई हो गया सबके बीच में, तो नेट रन रेट ही टाई ब्रेकर कराएगा। बिल्कुल। So I mean, winning by a margin is also something that these teams will have to focus on. Yeah. And I think there, the New York Apes have an inherent advantage because they do like to play a bit risky, right? They often try to go for those boundaries. They often try to be, a bit louder in their play style compared to someone like the Mumbai Grizzlies, who are a bit more measured. Although yesterday we did see a different side of them. We saw them, batting really, really well. I just hope they can keep up that performance because, like you mentioned, you don't want to be stuck in a spot where you're tied for points and then it is your net run rate that decides if you're going to be making it to the finals or not. Yeah, so, you don't want to be in a situation like that. Definitely not. Yeah, so I think there's going to be a lot of pressure on PK today. He has been the brute batsman here for the side of the Grizzlies, but unfortunately, just hasn't been able to get off the ground. He hasn't really hit the ground running, and maybe this time around, he can turn things. You've got the radical batsman starting through for them. Sometimes they even start with Chhatrapati in the winder. We'll see if they make any change-ups. We'll see if they think that is the issue, or if there's something else that they need to fix up as we get this first game underway. But yeah, Crips, why don't you tell me what you think the New York Apes need to keep in mind? So the New York Apes really need to keep one thing in mind, is that the Mumbai Grizzlies love to switch things up. In the first few days of the tournament, they were having Abhishek bowl first, and then it was Abhishek opening for the bats. Chhatrapati opening for the batting. This time it's PK and Devinder, the good old duo. And PK usually has been a star player for them, and he starts off strong as well. Oh yeah, showing us exactly why he's been given the mantle of the brute batsman. Smashes it towards the boundary for a 4. A solid opener here for the Mumbai Grizzlies. Good shot, but again only room for a 2 here. So all the Grizzlies are going to get a PK retaining strike. We did see some of the players, when they came on here, they said that, hey, having the brute batsman on strike is what you want for the power play over, but we often see them getting a bit too ahead of themselves and being taken out. Not this time around, though, not in the first 3 balls here for PK, as he's going to find another boundary here for the Mumbai Grizzlies. And that's the PK we know, that's the PK we love. जब भी वो आते हैं स्ट्राइक पे, बहुत सारे चौके छक्के मार के जाते हैं, और ऐसे जाते हैं क्योंकि वो यूजुअली जल्दी आउट हो जाते हैं, और इस बार भी वही फेट, इस बार भी वही स्टोरी. You can see the look of frustration on PK's face. His hand was on his forehead, conveying that he wasn't all that happy, but nonetheless, there's still Devinder and Chhatrapati here in the dugout who are going to be stepping out here onto the pitch now. So let's see what they can do. Usually PK जब भी आते हैं 1 या 2 ओवर के अंदर ही 30-25 रन बना के चले जाते हैं, and usually that's good. But since the last 3 games, वो less than 10 runs पे out हो गए हैं, and this can turn into a big problem for the Mumbai Grizzlies. Yeah. But so far, nonetheless, despite the wicket, not a half bad over here for the Mumbai Grizzlies. Another boundary would push it over the edge, but we'll see if they can manage that. Yesterday, it was one of the higher batting average days. We saw teams getting a lot of runs, and it looks like that trend might just be continued here, courtesy of Devinder, with that beautiful 4. Great over by Razin. As long as उन्होंने PK को out कर दिया है, that's good. PK अगर power play over के बाद survive कर जाते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा problems हो जाती है न्यूयॉर्क एप्स के लिए. यहाँ पे एटलीस्ट उन्होंने ब्रूट को एलिमिनेट कर दिया है, तो अब बचे सजनप्रीत और देविंदर. अब सजनप्रीत एक ऐसे बैट्समैन है जो टिके रहने में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं. बिल्कुल. I mean, he is more consistent. He might not be super flashy, but even he has been hitting those boundaries of late. So
Yeah, everyone from the Grizzlies picking it up, but exactly like you mentioned, he doesn't even try to push that ball a little bit further, just strokes it defensively, and that's going to be just one run. And again, perhaps very intentional, because maybe he wanted the winder to be in the striking end. He wanted him to take advantage of these early power play overs. We'll see if that does end up happening. A slightly mistimed shot going to be resulting in a dot here for G2, who has been a pretty phenomenal bowler here for the New York Apes. Leg spin up. Let's see if he can put in some more work. And ooh, okay. Close. That was close. Yeah. That could have been a catch, लेकिन boundary बन गया. Very good shot. I think Davinder जहाँ पे मारना चाहते थे बल्ले पे वहाँ पे लगा नहीं, उसके थोड़ा सा साइड में लगा. But फिर भी पावर प्ले ओवर्स की यही खासियत है कि जब इनसाइड फील्डर्स होते हैं, आप ऐसे शॉट्स अगर गलत भी खेलो लेकिन पावर के साथ खेलो तो हो सकता है आपको एक बाउंड्री मिल जाए. लेकिन इसी के साथ ये बाउंड्रीज स्कोर करते रहना थोड़ा मुश्किल होगा यहाँ पे. न्यूयॉर्क एप्स खुद काफी बाउंड्री स्कोर करते हैं, तो वो जानते हैं कि उन्हें कैसे खेलना है अगर उन्हें वो कंट्रोल करना है तो. एग्जैक्टली भाई, कंट्रोल करने की तो बात मत करो. कल देखा कोलकाता ने कैसे फील्डिंग की. इवन सिडनी पैंथर्स भाई बार-बार बाउंड्रीज बचा रहे थे. वैसी फील्डिंग अगर यहाँ पे न्यूयॉर्क एप्स वजह से आ जाए तो बहुत मजा आ जाएगा. Well, I'm not too sure if that was a drop catch, but nonetheless well fielded here, resulting in only 2 runs here for the Mumbai Grizzlies. Despite the second power play over coming to an end, they've been kept humble so far. Does that change now? Yes, it does. That's going to be off to the boundaries for a 4. Straight towards mid-wicket. No fielder there to stop that, and that marks the end of the power play. Great cut shot. Mid-wicket की तरफ जाते हुए at a एकदम perpendicular angle to the pitch. Nobody there to stop the ball. And इसी के साथ एक और बाउंड्री आते हुए मुंबई ग्रिजलीज के लिए. पावर प्ले उनके लिए एक्चुअली देखा तो काफी डिसेंट था, except for the loss of PK's wicket. This was quite a decent and respectable power play. Certainly was. And now 3 overs remain. The Grizzlies are sitting at 29. If they just continue to be consistent in getting these twos, they're looking at potentially 60, maybe even 70 runs. If they're able to get a couple of boundaries, and if they play their cards right. And we'll see if that comes through. The Apes, they've been known to take a lot of wickets around this time. Right around the time when the power play over ends. और उन्होंने ये विकेट लेने के लिए भी ट्रैप सेटअप्स करके रखे हैं. Look at the fielding positions. There's like 3 players towards point, cover and third man respectively. And there's also one more slip towards fine leg, apart from the wicket keeper himself. So अगर गलती से भी misjudge कर दिया या miss time कर दिया बॉल और वो पीछे की तरफ गया तो आराम से विकेट निकल सकता है. And again, I really like this approach here from the Mumbai Grizzlies. This is something that I think they might have even pioneered in a way. When they see that there are 5 fielders on the outside, all guarding the boundaries, and their only option is to hit the ball on the longer side of the pitch, they instead just focus on getting the 2s in. You know, death by 1,000 cuts. Keep your average up, and you don't really need to try and go for these boundaries, because again, you can just wait for the bowlers to get desperate towards the last few overs. Exactly, and desperate they will get. आपने कल न्यूयॉर्क एप्स भी परफॉर्मेंस देखी थी, राइट? उनके अपोनेंट जब भी रन निकाल रहे थे वो लास्ट के 4th ओवर में ही आया था. एक्चुअली 5th ओवर में तो न्यूयॉर्क एप्स ने भी बहुत सारे विकेट्स निकाल लिए, लेकिन 4th ओवर में वो लोग ने बहुत मार खाई थी. Okay. That was a nice ball indeed. Leaving only 1 for this over. G2, can he work a miracle? Can he find a wicket? Can he add on some pressure here? Well defended here by Chhatrapati. Good batting coming out here from the Grizzlies. Yeah, great batting, but it was a rather anticlimactic over, you know? Not a lot of risk taken by Mumbai Grizzlies. Not even a single shot where we were confused कि oh क्या ये boundary जाएगा, क्या ये catch होएगा? None of that sort. And this is what we saw, them do on those earlier days. But just in case you're wondering what the road to the finals looks like, that's what it's like. But we'll get back to explaining it in a little while.
The basic idea is the first and the second ranked teams will play each other. The third and the fourth ranked teams will play each other. And one of the teams, whoever loses from the third and fourth, will be eliminated. Play against the loser of 1 and 2. And then whoever wins that will be the upper bracket and the lower bracket players for the finals. So it really does help to be in that top 2. It sure does, because you get 2 opportunities. Once you get into that top 2 position, you have a chance of making it directly not just to the finals, but to the grand finals as well. Yeah. So you have to play one less match in order to get there. Oh, yeah. And again, the Grizzlies, you can see them start to get a bit more aggressive, start to get a bit more ambitious. Aiming for those boundaries, but Netaji so far doing a good job of just limiting the damage and really forcing the Grizzlies to get creative if they want to get those boundaries. And now 4 fielders placed towards the front, pretty much daring them to try and loft the ball and drive it straight. And oh, I like the awareness coming through from Chhatrapati here. He saw that fine leg was empty and even position, but just slight mistiming on that shot. Yeah, you also have to give credit to Netha. बहुत ही ज़्यादा fast delivery थी उनकी. Pace अच्छे से pick up हो रही है. ये देख लीजिए 145 की speed पे अगर ball जा रही है तो कैसे react करेगा इंसान? Yeah. And in fact, Chhatrapati वो ball पूरी तरीके से छोड़ते हुए सोच रहे थे कि शायद वो wide जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. Oh, it's a straight drive. Will it be caught? Yes, it will. This is what we talked about just a few moments ago. You attempt that straight drive at your own peril, and that is exactly why. Chhatrapati take it out of the picture here, and there's still 2 more overs to go for the Grizzlies. Yeah, luckily the Grizzlies have a lot of wickets as well, so they don't need to worry just yet. Plus they have another radical batsman. So it's not all over. Yeah. But it very well could be if you don't end up in that top 4. Indeed. Okay. Oh, that shot side might just be caught by the fielder. No, it is not. It finds a bounce. But yeah, I'm sure the Grizzlies had a mini heart attack there for a second. I certainly did, because that did not look good. Had the fielder been a little bit faster, might have even been a catch, but yeah, no such luck today. Nonetheless, all the dot balls and the wickets in the previous over starting to add up now as the Grizzlies, well, this is their last over. They've been given a wide, but I'm not too sure that's going to be enough to push them over 60. That still might be a hard ask. The New York Apes have no trouble scoring and chasing 50. So this needs to go all the way. Up in the air, and he's got it. Great movement. Basically running backwards and then catching it with a somersault in the end. Oh, what a beautiful catch coming through Davinder. He really wanted to try and strike that ball out of the boundaries, but yeah, just finds a connection on the upper side of the bat, closer towards the handle, so doesn't get that much power and gets caught out. And Abhishek going to be stepping onto the field now. Milan going to be on the striking end with 4 balls to go. He's been a very consistent bowler here for the Grizzlies, but can he do it on the batting end? Okay. He's going to be finding those 2s here. And they have JD just adding to the pressure here in the final overs. Milan is one of those charismatic batsmen. He waits for his opportunity and then strikes really hard when he gets it. But at this point, he doesn't have the luxury of waiting. There's only a few balls left. So Milan will have to show his true colors right from the get-go. Yeah. And that leaves just 2 balls in this over here, Cripps. I am not too sure what the Grizzlies can do now to set up a respectable score. 51 is not all that great. But looks like Milan will also try and get some boundaries in. Tight fielding coming through, only allowing the 2 runs. The Mumbai Grizzlies staring at 55 off this final ball if they don't find a boundary. So, yeah, things not looking the easiest. But again, if JD makes a mistake here, he oversteps the line. If it's a no ball, if it's a wide ball, then there might be a lifeline. And even if there isn't, it's going to be a straight shot towards square leg. He tried to loft it, but unfortunately, when the ball is this short and it's bouncing this high, there's only so much that you can do. Yeah, and that marks the end of the first innings. As the Mumbai Grizzlies, they will only be able to score 55 here.
Not the highest of targets. Certainly not. A target that can be demolished by the likes of the Apes. Yeah, but we have also seen the likes of Abhishek and Milan sometimes bowling these ridiculous overs which toss all the batsmen aside, send them back into the pavilion again. But those have been rare. Yeah. They need to come through today. I mean, Milan came through yesterday with some really stellar bowling. Swapnil is going to be starting things off here for the Grizzlies, and he's been a really good bowler too. But this is the New York Apes we're talking about. We have to give some credit to their batting because, yeah, I mean, these guys woke up from a deep, deep slumber yesterday. Yesterday's performance was quite something, if you guys caught that. So, All new Pulsar Mania's here. Maniacs wanted. Lenskart. Download the app or visit your nearest store. लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। do keep your eyes and ears open. You never know what you might miss. And that is exactly why. An effortless shot here from Netha from the side of the Apes for a 4. And that was such a well-timed shot as well. So good. Basically lifting the ball somewhere between a loft and a stroke. Yeah, and that's the balanced batsman coming through here for the side of the New York Apes. That's balanced? They're actually putting him on striking end? Yeah, that is a... Sheesh! That's why that shot is so unique. Look at the movement of that. Going to be caught? Yes, it is. Oh, Swapnil. He finds the wicket in the very second ball. And that is characteristic of the Grizzlies. The bowling always comes through when their batting does not. And Swapnil shows us why and how. No, but I also have to blame it somewhat on the batsman. He tried that same shot yet again. And this time the ball was slightly outside the off-stump line. And that doesn't give you the distance you need. Yeah, and the Apes definitely a little spooked after that last wicket. And it's now actually Razan stepping onto the pitch. Another balanced batsman here for the New York Apes. They're not taking out the radicals. They're saving up Jagdish and Jitendra. That is JD. Yeah, this is definitely a unique strategy from the New York Apes. Usually हमने teams को starting में देखा था वो हमेशा brute and radical batsmen के साथ शुरू करते हैं. फिर बीच में somewhere near day 4 and 5 हमने सारे teams को balanced batsmen को इस्तेमाल करते हुए देखा. And धीरे-धीरे वो meta shift होने लगा. अभी न्यूयॉर्क को देख लीजिए वो स्टार्टिंग में ही बैलेंस सारे निकल रहे अपने ताकि वो अपने ब्रूट्स एंड अपने रैडिकल्स को एंड तक बचा सके. Yeah, I like that strategy too क्योंकि आपके जो स्पिनर्स होते हैं आप हमेशा अपने पहले 2 ओवर्स में यूज करते हो and we can see why, right? That wicket came through followed by, you know, a couple of 2s and now a dot ball. So the first few power play overs, even though they're only 2-feeder outside, are super dangerous because the spinners, man, they're really hard to deal with. Definitely. But regardless of whether New York wins or not, I'm just happy कि वो ये experiment कर रहे हैं. Oh yeah. And unless your name is Soumyadipta Biswas, I don't think you're going to be smashing that ball out in the first 2 overs. Definitely not. If you're going to be bringing out some of your balanced batsmen. And that's the thing, right? Because if your brute has more experience playing these actual matches against the spinners, he's able to leverage that knowledge in the future, use it against them. But I mean, PK just hasn't gotten those same chances every single time. Nonetheless, Mumbai making up for their last inning with their bowling in this one. Abhishek too, just conceding the first run. The first ball of this over. Quite an admirable over, I must say. And Abhishek, बहुत बार हमने देखा कि ये पावर प्ले के अंदर ही खेलते हैं, कभी फर्स्ट ओवर या सेकंड ओवर, लेकिन at least he's out here. So Mumbai Grizzlies इतना एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे जितना न्यूयॉर्क एप्स कर रहे हैं. Oh yeah, that's a leg bye given here from the umpire. कोई बात नहीं. At least it proves कि अभिषेक के शॉट्स कनेक्ट करना मुश्किल हो रहा है. Yeah. New York Apes अगर यहाँ पे desperate हो गए बाउंड्री के लिए,
और अगर कमल की विकेट खो बैठे तो उनकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा. I don't think उन्हें अपने बैट्समैन इतनी easily give up करने, especially not the brute. Oh, but this time around he smashes it across for a 4 as the New York Apes find some respite here in the second half of this over. About time they went for a boundary. उनको confidence gather करने के लिए ये एक boundary बहुत ही necessary थी. That too on one of the trap balls, you know. Offside stump के line में almost wide and वो भी good length की ball डालना. It's basically like a trap ball. अभिषेक इस बार straight line में डालेंगे, but it is still caught. Yeah. Ooh, and yeah, some clutch fielding coming through as well, making sure there was only room for the 2, and even that 2 could have been a whole lot dangerous if it was fielded any faster. But with that, still a good over here for Abhishek, making sure that the New York Apes actually don't catch up with the Grizzlies, at least where they were in the power play overs. But Kamal has something to say about that beautiful shot straight towards mid-wicket, and again that's going to be a 4. फ्रंट फुट शॉट्स ही अभिषेक की वीकनेस है. वो जब भी यॉर्कर डालते हैं या फिर फुल लेंथ बॉल डालने जाते हैं, अगर कोई प्लेयर एडवांस में आके उन्हें खेल सकता है और टाइमिंग मिस नहीं करता, तो अभिषेक को टारगेट करना बहुत आसान हो जाता है. क्या इस बार वो चेंज करेंगे? नहीं, एक बार फिर से फुल लेंथ बॉल और ये जाएगा हाँ में. कैन इट बी अ कैच? वेल, कैच नहीं हो तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट फील्डर उन्हें पकड़ लेगा. Yeah, a third run attempted and I think found as well. As oh wait, they're gonna go for a 4th one and they are safe. Oh no, that's what happens when you overthrow. और वो भी इतना ज़्यादा overthrow हो गया कि एक और रन लेने का मौका मिल गया. बिल्कुल, लेकिन उसी के साथ Kamal actually striking end से हट चुके हैं, so maybe some breathing room for the Mumbai Grizzlies remains to be seen. That depends. अगर कमल striking end से strike area से हटे हैं, तो चhatrapati क्या उनके पार्टनर को आउट कर पाएंगे? क्या वो रजीन को यहाँ से निकाल पाएंगे? रजीन की बॉलिंग बैटिंग दोनों ही काफ़ी बैलेंस है, दोनों ही काफ़ी अच्छी है. He's not the star player by any stretch of the imagination, लेकिन उनको वैसी परफॉर्मेंस देने की जरूरत नहीं पड़ती यूजुअली. और वो हिसाब से चhatrapati और रजीन दोनों का फिलॉसफी बैटिंग का एकदम सेम है. वो बहुत डिफेंसिवली खेलते हैं. Oh yeah, बहुत ही धीमी गेंद. आउटसाइड फील्डर ऑलमोस्ट 30 यार्ड सर्कल तक भागते हुए वो गेंद वापस देने के लिए. Well, even now, the Apes have a pretty good chance of winning this one out. Just need to maintain the average run rate. 30 needed off of 17, turning into 28 off of 16. Very doable with some margin for error. Yes, plenty of margin for error actually. 2 balls to be precise. Yeah, and I think 2 balls are more than enough for New York Apes. अब मुंबई ग्रिजलीज यहाँ पे इंतजार नहीं कर सकते डॉट बॉल्स का. उन्हें विकेट्स निकालने ही पड़ेंगे, डेंजरस बॉल्स डालने ही पड़ेंगे. लेकिन वो कब डालेंगे, आई थिंक सबसे महत्वपूर्ण वही रहेगा, क्योंकि अगर आप अभी वैसी गेंदबाजी करना शुरू करते हो तो हो सकता है कि न्यूयॉर्क एप्स का गेम और भी आसान हो जाए. एक स्विंग आएगा, सबका हुलिया उड़ जाएगा. अब तक एक भी स्विंग डाला नहीं है चhatrapati ने. हम जस्ट वेटिंग कि कब वो डालेंगे. तो यूजुअली स्पिन स्विंग के बीच में बहुत ज़्यादा वेरिएशन करते हैं. Okay. This one was a little bit of an off spin, लेकिन short length था. And again, defensive batting coming here from the Apes. Not something we've seen them do quite often. They are huge fans of smashing that ball across, but it seems that the points table has really woken them up and have opened their eyes to what they need to get done if they want to get to the finals. Yeah, and they don't need to take these risks, यार, Floki. उनने अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज करके ही एक बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है ऑलरेडी, एंड दैट इज इनफ रिस्क फॉर वन डे. Yeah, it sure is. But we'll see if that risk pays off or not. Oh, a swing and a miss. All right. You'll take that if you're the Grizzlies. Marking the end of Chhatratapati's over. टाइमिंग एक्चुअली देखे तो बहुत अच्छी थी वो वाले शॉट पे, लेकिन बैट्समैन की पोजीशन जो है वो थोड़ी चेंज हो गई थी. थोड़ा और टुवर्ड्स द ऑफ साइड जाना चाहिए था टू कनेक्ट दैट शॉट. बट कोई बात नहीं, लाइक वी सेड, न्यूयॉर्क एप्स के पास काफ़ी ज़्यादा मार्जिन फॉर एरर है. या 22 रन चाहिए 12 गेंदों में. एंड अब बॉलिंग करने की बारी मिलन की है, जो काफ़ी अच्छा बॉलिंग करता है एक्चुअली ये सिचुएशंस में. लेकिन इस बार रन रेट उनके साथ नहीं है. बिल्कुल, रन रेट उनके खिलाफ है, तो उनको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे, थोड़ी सी अक्लमंदी के साथ खेलना पड़ेगा, तो वो न्यूयॉर्क एप्स को शायद
ऑफ गार्ड कैच कर पाए, बट इसी की बात कर रहे थे हम, जब आप रिस्क लेंगे तब वो बुरी गेंदें आना शुरू करेंगे, उसी बुरी गेंदों पे न्यूयॉर्क एप्स अपना खेल खेलेंगे। एक शानदार चौका। That was really late fielding as well. Usually अगर इतना ज़्यादा मार्जिन रहता है तो फील्डर भाग के आ सकता है इतने टाइम पे। हमने एक बार तो मजाक में ये भी कहा था कि एनिमेशन देख लो फील्डर कितनी तेजी से भाग रहा है। लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं हुआ ये वाले में। चौका जाते हुए मिलन का पहला बॉल और इस बार आगे आके खेलेंगे। एडवांस शॉट, पॉसिबिलिटी ऑफ अ कैच एंड ही इज आउट। There it is. This is why Milan is respected and feared. Because you might look at him and dismiss him as just another man who can only do the work if his team gives him a good start, but no, he can come through when his team needs him to. That's another wicket. That is Kamal, the brute, off the pitch, and now JD stepping in. The radical batsman with a look of focus, a slight look of confusion too, wondering what needs to be done. I think he knows exactly what needs to be done. The captain of the New York Apes has been exceptional in strategizing. बहुत सारे नई चीजें ट्राई करते हैं ये, बैटिंग ऑर्डर बॉलिंग ऑर्डर दोनों चेंज करते रहते हैं और इस बार रजीन स्ट्राइक पे है तो दे विल ट्राई टू गेट जेडी बैक ऑन स्ट्राइक, लेकिन अगर वो भी नहीं हुआ तो न्यूयॉर्क एप्स डोंट नीड टू वरी जस्ट येट। ऑल देयर स्पेयर बॉल्स आर आउट एट दिस पॉइंट। उनका रिक्वायर्ड रन रेट इज स्क्वायर 12, मतलब हर एक बॉल पे 2-2 रन चाहिए एवरेज। आई मीन वो अगर 1-2 बाउंड्री लेते हैं तो हो सकता है कि इवेंचुअली आप एक गेंद पे शायद डॉट बॉल आपको मिले और आप एक गेंद पे हिट नहीं कर पाए, लेकिन जब तक आपको एक बाउंड्री, एक चौका, एक छक्का मिल रहा है तब तक भी आप ये गेम में ये रन रेट बनाए रख सकते हैं। देखते हैं कि मिलन वो होने देंगे या नहीं। काफ़ी शानदार बॉलर है, लेकिन उनको इससे भी ज़्यादा शानदार गेंदबाजी करनी पड़ेगी अगर वो चाहते हैं कि मुंबई ग्रिजलीज का काम आसान हो जाए। Exactly. Milan is the fast bowler, you know, लेकिन when it comes to econ, उनका econ rating is 10.85 और उनके wickets, actually देखें तो wickets उनके टीम में सबके ही काफ़ी equal है। दविंदर, मिलन, स्वप्निल, अभिषेक, all of them have 7 wickets each. So it's not like one particular bowler shines more than the next. हाँ, but everyone picks their moments to shine. किसी गेम में अभिषेक 2 विकेट निकालेंगे, किसी गेम में मिलन 2 विकेट निकालेंगे, तो you know सब लोग बारी-बारी से ऐसा करते हैं। हम देख सकते हैं कि जिस हिसाब से गेंदें बाकी है ये गेम बहुत ही क्लोज होने वाला है। Yep, and that's exactly how we want it. 1 ball remaining for this over, and after that there'll only be 1 bowler standing between the way of New York Apes and certain victory, but is that victory certain? That's the big question mark. And I don't think that will be answered that soon. Another 6 balls of suspense. Slow, burning suspense. It grips you in its flames. And well, stay glued to your seats, folks. Do not get up just yet, else you might miss the entire story. It's hot to do that too. Because this game is so heated. JD now. रामायण खत्म हो जाएगी और फिर सोचेंगे कि रावण कौन थे। But it's also another question कि यहाँ पे राम कौन, रावण कौन? Hey, that we're not going to love to be heroes. One of them will certainly love to be the villain. Well, again, the New York Apes maintaining the consistency here. 10 needed now off of 5. The margin for error dwindling slowly but surely for both sides. But perhaps the bowlers can take advantage of the psychological pressure. Oh, we're back. And okay, that's a dot ball. No, it's a wide coming through here. You can't do that. You cannot afford to throw wide balls. The margin of error extending here for the New York Apes and diminishing for the Grizzlies. Even the required run rate has diminished to less than 12. This definitely makes the lives of the New York Apes easier. The captain, Davinder, face-palmed himself the moment that wide came through and he realizes his mistake. Oh, it's a beautiful shot. It will cross the boundary for a 4 here. JD stepping up as and when needed. Only one objective in his mind.
to smash it across and get his team into that final. Keep in mind, ladies and gentlemen, that both Mumbai and New York Apes, they've still got a couple games left. And they need to win at least one of them to stand a chance of qualifying. If they lose both of them, they are out. They are done and dusted. Oh! They tightened up the field here. The outside fielder will be able to prevent the 4 from coming through, but still 2 run between the wickets. And now 2 runs needed off of 3 balls. Or is it the other way around? Any bowler in their shoes would be crying right now. Yep. They would feel that the world wants them to lose. The odds are stacked against them, but despite all of that, Davinder perseveres and JD goes for the open skies again. Oh, and there it is. I believe the score has been tied now. Or has it? Well, the required run rate is 3. They just need one more connection, one more run. Even if they don't smash it, even if they don't really try to toss it outside the 30-yard circle, a connection is all that's required, and that should be enough to win the game. A dot ball. Oh my God. But is that going to be a wide? They win by default. The last run required is given to them for free. Oh, and no. Mumbai Grizzlies tie a ribbon on top of this gift and give it to the Apes. Oh, the Mumbai Grizzlies, that has to be painful for them. Losing the game due to their own shortcomings. The Apes didn't even have to hit that last ball. And that's going to be the game here, folks. Those are the stakes here in GEPL. And the New York Apes up in celebration. At this point, you'll be thinking about every single white ball that you've had. You did have quite a lot of them. You've given away at least 3 free runs because of the white balls in this inning, maybe even more. And all of these mistakes will come to haunt you. Let's see if they can win their next game and keep themselves alive here in the GPL. But first, we'll head to a short break. All new Pulsar Mania is here. Maniacs wanted. Lenskart. Download the app. लेकिन ये पाइप चलेगा. Finolex pipes. पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं. The gravity of the win will only be understood by the New York Apes. They still have 2 more matches to go, but that's going to be tomorrow. For today, Mumbai, they have been taken down once. दूसरा मौका, एक आखिरी मौका शायद से, क्योंकि अभी बात आ चुकी है मुंबई के सर्वाइवल पे. क्या मुंबई सर्वाइव कर पाएगी? Only the future can tell. But फिलहाल के लिए दोनों कैप्टन्स प्लीज मेरे पास आ जाइए. दविंदर, कैप्टन ऑफ मुंबई. यार एक बार जोरदार तालियां यार, क्या ही मैच था. एंड जेडी ऑफ कोर्स, स्टार्टिंग ऑफ विद जेडी, कितना अहमियत रखता है ये जीत आपके लिए? इस स्टेज में किसी भी टीम के लिए ऐसी विन मतलब बहुत मायने रखती है, चाहे पाजी हो, मेरी टीम हो या फिर किसी और की टीम भी. इस टाइम तो मतलब सबके लिए विन बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट, तो आपके अभी भी 2 मैचेस और बाकी है, उसके लिए कुछ प्रिपरेशंस आप सोच के रखे हैं पहले से? हमारा ज़्यादा लंबा कोई टारगेट नहीं रखते हम लोग. नेक्स्ट मैच पे फोकस कर रहे हैं, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है. एक कदम आगे आगे बढ़ाना है. ठीक है, थैंक यू सो मच जेडी. बट उसी के साथ रविंदर पाजी, आपके भी 2 ही मैचेस बाकी है, लेकिन उसमें से एक मैच आज है. ये आज के मुकाबले के लिए कुछ हट के आपको करना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. नहीं, बिल्कुल करेंगे. अभी हमारा डू और डाई है. ठीक है, तो करेंगे कमबैक. होता है ऊपर नहीं तो थोड़ा करेंगे. वेल, ऑल द बेस्ट टू यू बोथ. एक बार हाथ मिला लो आप दोनों. बहुत ही बढ़िया खेले दोनों टीम्स. एंड विद दैट बीइंग सेड, हमारे एनालिस्ट तैयार है पोस्ट मैच एनालिसिस के साथ साथ, जिसमें सारे के सारे जो डिटेल्स है वो आपको समझाएंगे. क्या हो सकता था, क्या हुआ है, सारे डिटेल्स एनालिस्ट समझाने के लिए. बॉयज प्लीज टेक इट अवे. All new Pulsar Mania is here. Maniacs wanted.
Lenskart. Download the app now. लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। Well, there it is. New York Apes get that all-important victory. Mumbai Grizzlies, if you're a fan of them, you would be surprised with that. But of course, it was there coming, isn't it, Chetan? New York winning the toss, choosing to bowl, putting Mumbai to bat, and immediately under pressure. Absolutely, Roshan. You know, this is that stage of the tournament where even the smallest mistakes are going to put you under pressure. They're going to have big implications. Just like this win for New York, who, by my calculations, have gone to the top of the table. But obviously, we'll take a look at the points table later. But absolutely right, you know, Mumbai is batting under pressure, and New York winning the day. Well, now, one thing, of course, which I'd like to talk about is that the fact that they sent the balanced batters earlier, and you eventually did see that the radicals coming out later, which actually helped their cause, because then you have the hitting capacity, which makes it much more better. Yeah, I mean, that's what they've been doing over the past few matches. I mean, Razin has obviously been performing well in his games. I mean, you look at that, the fact that he has 100+ runs in the tournament. But what you're saying is absolutely right. It was a bit surprising to see Netaji to come and open the innings. But Kamal giving them a good start, and then obviously Razin doing the job for his team. And now you take a look at Mumbai Grizzlies batting scorecard. The big contributors again, Davinder and Sajid. PK perhaps needed to perform today. He is the #1 batter in real cricket. So yeah, in that sense, kind of a disappointment from him. Sarjan, of course, and the likes of Davinder did try to give a little stability there, but not really for a long time. At the end of the day, even Sarjan went as well. On the other side, we have a look at the New York Apes bowling figures then. Of course, they took 3 for the Mumbai Grizzlies, against the Mumbai Grizzlies rather. And then eventually what they did well is restricted them well within 60. Yeah, I mean, agar aap dekhe, Netaji ne jo गेंदबाजी की, that was really good. If you're just giving away 5 runs in 1 over and taking a wicket, that is exceptional. लेकिन पूरा bowling card ही बहुत अच्छा है. सिर्फ जेतू ने 13 रन दिए, राजिन ने 16 रन दिए, लेकिन उन्होंने विकेट दिया, तो वो बैलेंस हो गया वहाँ पे. लेकिन फॉल ऑफ विकेट्स आप देखें तो 10 से लेके 44 तक एक अच्छी पार्टनरशिप हुई दविंदर और साजन की, हम उस पर भी बात करेंगे. लेकिन फिनिश मुंबई जो है अच्छे तरीके से नहीं कर पाए. There, of course, on the other side, looking at the Mumbai Grizzlies bowling scorecard there. Well, they could, I mean, of course, not really a good total to defend, of course, demotivates the bowlers. Oh, it does. But Swapnil tried his best with those 1 wicket and 8 runs in his 1 over. Good start for them in terms of getting that wicket. But Abhishek, once he was expensive, वहाँ से power play में थोड़ी सी जान चली गई. और जैसा हमने देखा कि न्यूयॉर्क एप्स ने किस तरीके से स्ट्रैटेजी बदल के इनकी गेंदबाजी का सामना किया. So New York Apes came ready in terms of their strategy today, and they are victors. There, of course, even in the last game, winning against Dubai, they won by 4 wickets. Here again, 3 wickets. I think New York Apes are just hitting that peak at the right time. Absolutely, and I'm glad you used the word peak, because we will come to that in just a moment. Let's talk about man of the match, Razin. 20 runs, 133 strike rate. He also picked up a wicket. Very, very crucial performance from Razin. Kal hamari unse baat bhi hui thi, you know. He likes big moments. He enjoys the spotlight. So I'm just wondering how much of that is a personality trait. And he may be reticent, but on the field, fireworks whenever he gets a chance. And of course, with the fact that they've been reshuffling the batting order, and rather a lot more confidence in all the batters are going to come in, speaks volumes about how New York have really going about with their thing. We'll have a look about, of course, the partnerships. One, of course, the crucial one, looking at the New York side first. And starting that, of course, Razin and Kamal really making things easier. Yeah, I mean, they tried Netaji at the top, which was really surprising. It did not start work. with the 4, I guess, but not really working in their favor. Yeah, and it didn't work. I mean, you can't expect it to work more than that. I mean, I think he's done what he's done. But look at that, Razin getting those runs along with Kamal, and this is where Kamal got the license to hit. I think that partnership is what won the game for New York Apes. Maybe batting was from Mumbai, because there's just that one man, Davinder, who really got the push then. And PK, well, worrying signs. Absolutely. And PK का contribution आज नहीं था.
बहुत ही वाइटल मोमेंट है ये टूर्नामेंट में। तो आपके जो 3 मेन बल्लेबाज हैं, पीके, दविंदर, साजन, हमने देखा है दविंदर अब फॉर्म में वापस आ गए हैं। ही हैड अ बिट ऑफ अ लल इन बिटवीन। साजन, ही इज ऑलवेज बीन देयर यू नो बैटिंग मेन स्टे। पीके से कंट्रीब्यूशन की और ज़रूरत है। मुंबई के पास अभी आज दूसरा गेम भी है और उनके पास एक कल गेम भी बाकी है। तो ये दोनों गेम्स जो हैं मुंबई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आई थिंक देयर 3 बैट्समैन, especially PK, needs to contribute more, needs to really fire. Well, they did have that patch where they were scoring well, they were winning as well, but towards the last couple of matches, I think it's really not working out for Mumbai. We did have 4s and 6s in the 2 innings. Let's have a look at the 4s and 6s brought to you by Pulsar NS125, Showstopper. Well, we did have 4s and 6s in that, but also a few wickets which fell. We'll have a look at all the wickets brought to you by Lenskart. Then, of course, what it does right now is get that little movement for NewYork Apes and trying to strengthen their position, of course, in the points table. Mumbai Grizzlies have a little challenge out here. Well, I'm doing the calculations here and I'm also hoping the, yeah, there it is, the points table. Now, look, like I said, New York Apes rising to the top of the table and congratulations to New York क्योंकि ये business end है tournament का, यहाँ पे हर performance matter करेगी और इस performance के साथ they have got to the top of the points table. Let me remind you, 14 points are not enough, लेकिन ये एक शुरुआत है. 2 matches बाकी हैं, तो gives them a chance to qualify for the knockouts. Let's talk about Mumbai Grizzlies. अब इस लॉस से क्या हो गया है, उनके पास केवल 2 मुकाबले रह गए हैं और उनको वो दोनों मुकाबले जीतने हैं. 14 points do not guarantee you qualification. 16 points gets you a lot closer to the top 4. उनके रन रेट को भी चोट पहुंची है. They're down to 0.3. So they need to really buck up. The last 2 games becoming really, really vital. And of course, we have London versus Chennai coming up next. Chennai can cause a few problems for London. They have nothing to lose really. London, a lot to gain with this movement in the points table. Then, of course, also the Dubai Vipers will be questioned eventually. Like you mentioned, 14 points won't be sufficient. But what's more important is that we, of course, have a new leader on the charts. And while we break that to you, New York Apes have just hit the right time. Oh, absolutely. And that is what we have been saying from the very beginning. ये business end है. अब सिर्फ 9 मुकाबले रह गए हैं इस round robin league stage में. हर मुकाबले पे उतार चढ़ाव है. हर मुकाबला important है knockouts के लिए. And of course, we have the next game. Remember, London Rhinos taking up the Chennai Wolves there. Chennai Wolves can spoil the party of London Rhinos, but for that, we'll have to wait and watch. For now, let's go down to our host.
टेबल के एकदम नीचे से अगर ऊपर तक का सफर करना है तो दो एग्जाम्पल सेट किए गए हैं, एक ऑफ कोर्स कोलकाता के द्वारा एंड दूसरे न्यूयॉर्क के द्वारा। अब इनसे कोई और कंपटीशन दे पाएगा कि नहीं कहना बहुत मुश्किल है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है, बट दोनों ने मुझसे डिसएग्री किया एंड दोनों अभी टेबल के ऊपर राज करते हुए न्यूयॉर्क एप्स पिछले मैच को जीतने के बाद सबसे ऊपर बैठे हैं 0.39 एनआरआर रेके एंड ऑफ कोर्स 14 पॉइंट्स। सो सबसे पहले जेडी भाई आप बताओ कैसा लग रहा है? आप एक टाइम पे ऐसा हालचाल था कि टेबल के एकदम नीचे जाने वाले थे, आप बाहर होने वाले थे, लेकिन वहां से टेबल के ऊपर राज करना, ये जो इमोशंस का डिफरेंस है थोड़ा समझाइए। पहली बात तो मैं इसका क्रेडिट देना चाहूँगा अपनी टीम को, जी हाँ, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। सारे प्लेयरों ने बहुत अच्छा खेला अभी तक और अभी सिर्फ आधा काम हुआ है, अभी कोई काम पूरा नहीं हुआ। और ये GPL है, इसमें जो पहले दिन टॉप पे होता है वो दूसरे दिन सबसे नीचे भी पहुंचता है और जो नीचे है वो कभी भी टॉप पे भी पहुंच सकता है। अभी तक एक दिन के अंदर ऐसा लगता है कि ये तो पक्का क्वालिफायर है, दूसरे दिन वो 2 मैच हार भी जाती है। और जिसका लगता है कि ये बाहर हो सकती है वो बैक टू बैक 3 मैच विन भी कर जाते हैं। जी हाँ, तो खुद की बात कर रहे हैं भाई देवे। नहीं मेरी नहीं, सारी टीमों की बोल रहा हूँ जी। अब देखते हैं क्या होता है आगे के लिए कुछ प्रिपरेशन आपने लिया है कि हाँ भाई आगे ऐसे ही करना है, कुछ ऐसा सोचो आपके दिमाग में? अभी सबको सिंपल रखने का ही सोचा है, कल के मैच पे फोकस करेंगे। कल 2 मैच है जी, और कल के 2 मैचों में भी अभी हमारा फोकस सिर्फ पहले मैच पे, सेकंड मैच का बाद में। ये बात आपने मेंशन की थी प्री मैच में भी, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आगे चल के क्योंकि 2 मैचेस है आपके, आपको लगता है कि एक मैच जीतना काफ़ी रहेगा या फिर दोनों को ही जीतना आप टारगेट रख रहे हैं? सिंपल खेलेंगे, नॉर्मल रखेंगे, देखते हैं, हो सकता है 2 के 2 जीत जाएं, 2 के 2 हार भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि सामने वाला भी अच्छा खेल सकता है और सारे लोग यहाँ बढ़िया खेलने के लिए आए। बाकी देखते हैं रिजल्ट पे। तो आपको वही फंडा इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे याद है ये स्पाइडरमैन सिनेमा का था, ये बोला गया था स्पाइडरमैन के गर्लफ्रेंड के द्वारा कि एक्सपेक्ट डिसअपॉइंटमेंट तो यू वोंट गेट डिसअपॉइंटेड। तो जेडी भाई भी वैसे ही मेंटालिटी रखते हैं। तो जेडी भाई मैं अभी थोड़ा सौरभ से बात कर लेता हूँ। सौरभ, आप भी कुछ सिमिलर जर्नी गुजारे हैं इस टूर्नामेंट में। आप एक टाइम पे शुरुआत में एक मैच हार गए, उसके बाद जीते, फिर हार जीत के साथ साथ आप टॉप ऑफ द टेबल पे थे, टॉप 3 में आपका नाम था, फिर आप नीचे चले गए एंड अभी कल हमने देखा कि आप टेबल के ऊपर चले गए, लेकिन ये भाई साहब ने सोचा सबको हरा के ऊपर जाएंगे। क्या कहना है आपको इस पूरे सिलसिले के बारे में? इन्होंने बहुत अच्छा गेम खेला और आज टॉप पर यही लोग हैं, सेकंड पर हम हैं जी। अभी हमारा 3rd मैच है, अगर वो जीतते हैं तो हम भी टॉप कर जाएंगे। लेकिन कल इनके फिर 2 मैचेस है, तो फिर ये कल दोबारा आ सकते हैं टॉप पे। हाँ आ तो सकते हैं ना, कल हमारा भी तो एक मैच है। तो फॉर्मेट के बेसिस पे 3rd और 4th पोजीशन की टीम्स को सबसे ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने हैं GEPL फाइनल्स में। तो आप चाहेंगे कि ऑफ कोर्स टॉप 2 में ही रहे, राइट, टॉप 3 और 4 में ना जाए। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले जो भी 2 मैचेस बाकी, आज एक कल एक, वो जीतना। उसके लिए क्या प्रिपरेशंस है एंड टीम में क्या माहौल चल रहा है? टीम का यही माहौल है कि अब 2 मैचेस जो बचे हैं उसको हमको जीतना ही पड़ेगा और जीतकर हम टॉप 1 या 2 पर बने रहेंगे। यही हमारी कोशिश है और पूरी टीम की यही सोच है हमारी। तो आपको लगता है कि जितने मैचेस आपने खेले, जितने पॉइंट्स आपने अपने नाम अभी अभी किए हैं, ये काफ़ी है क्वालिफाई होने के लिए, चाहे वो टॉप 1 में हो या फिर एकदम 4th पोजीशन पे हो? नहीं, उसके लिए जीतना पड़ेगा ना, क्योंकि 14, हाँ, क्योंकि 40 पॉइंट्स से हम क्वालिफायर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एनालिस्ट ने अभी बताया था हमें कि आपको क्वालिफायर करने के लिए कम से कम एक मैच जीतना पड़ेगा। वेल, एक बार जोरदार तालियां हो जाए सौरभ एंड जेडी के लिए, क्योंकि ये दोनों ने जो मेहनत किया है, दैट्स अमेजिंग। एक बार जोर से तालियां हो जाए पूरे स्टेडियम में फॉर जेडी, द कैप्टन ऑफ न्यूयॉर्क एंड द कैप्टन ऑफ कोलकाता, सौरभ। वेल, इसके साथ साथ देखिए मैं इन दोनों को लेके अभी यहाँ से गायब हो जाने वाला हूँ, उसके बाद हम जरूर मुलाकात करेंगे आप लोगों से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। of manias here. Maniacs wanted. लेकिन ये पाइप चलेगा।
फिनोलेक्स पाइप्स। पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं।